Home decor na chito essential चला रहा है मुझे क्या future generation. So let's beat plastic pollution. में हमारा ऑब्जेक्टिव्स है कि to speak about an issue that affects us all, plastic pollution. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एज यू ऑल नो, और हमारे स्कूल में भी हमने सेलिब्रेट किया था। एंड मैं कल इंट्रो शूट करना भूल गई थी, सो हियर आई एम। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। सो या नाउ लेट्स एंजॉय द वीडियो। अभी हम यहाँ पर स्किट के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये दोनों है टूरिस्ट, ये है हमारा प्यारा सा बनी और मैं हूँ इनकी टीचर। सही है। अभी इसमें से हम कॉपी करेंगे इसको। हम ये अभी इंग्लिश लैंग्वेज में, अभी हम इसको लद्दाखी वर्जन में, लद्दाखी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। सो या राइटर किसका है स्क्रिप्ट दिया एकाना रिहर्सल दुला देखना स्क्रिप्ट दुला एकाना एंकरिंग दिया। It was such an inspiring and meaningful speech. So now I would like to invite our respected principal, sir, vice principal, no, respected vice principal, sir, and dignitaries on the Tarung just the man oile, tarung ta start just no. Then izuk shik dugle mahol bo. Ivo yung nga late ni host. Tengiri minga jinle. thank you principal Behind sir. the scene. Thank you vice principal sir for your amazing speech. Next, let us Our welcome India Salim le Prasad principal on sir. stage to deliver a thought-provoking speech on the importance of preserving our environment. Thank you. home decor na chito essential चला रहा है मुझे क्या देखिए तो बेस्ड ऑफ एक ट्रे यार गाल हमेशा बेस्ट होता है like home decor कुलिया छनरिया शो स्ट्रांग है एक मिनट में चेक बदल After we throw it away, most of it ends up in landfills, rivers and oceans, where it stays for hundreds of years. Unlike paper or food waste, plastic does not decompose. Such natural beauties to mirror: mountains, lakes, beautiful birds, wildlife, to wild animals and thought. Let us welcome Idris Mahmood to please come on to the stage. Good afternoon to all of you, our respected principal sir, lecturer, master teachers, and all of you, my dear brothers and seniors, the dear world for future generation. So let's beat plastic pollution together. Thank you and have a great day. No words truly added value to today's event. Now get ready to witness the magic of rhythm and movement. Let's welcome our talented dancer on stage with a huge round of applause.
मकसद होता है। और आज के इस दिन का मेन हमारा ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें सारे बच्चों को ये नॉलेज हो, इसके बारे में अवेयरनेस हो कि हमारा जो इन्वायरमेंट है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस डे के बारे में उनको फुली अवेयर हो जाता है और बच्चा एक ऐसा मीन्स बन जाता है, क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे, आप अपने घर में जाएंगे तो घर में आप अपने पेरेंट्स के साथ जो From household to market, plastic is found everywhere. People use plastic because it is convenient to use the cheap. However, too much use of plastics is creating plastics to pollution the Let's call upon our talented student, let them gather to come on the stage and present his speech. Good afternoon, everyone. Most respected, our principal, vice principal, lecturer, master, teachers, and my dear brother and sister. Today, I want to speak about an issue that affects us all: plastic pollution. Plastic pollution is choking our planet, filling our oceans, harming our wildlife, and even injuring our food. It's time to act. We must reduce single-use plastic. Good afternoon to everyone. Respected principal sir, lecturers, master, teachers, and all your and my dear friends. Today we gather to celebrate World Environment Day. I have been given a topic that is not just a subject for today, but a challenge for our whole generation: ending plastic pollution. Let me start with the fact that shocked me. Every minute, a garbage truck full of plastic is dumped into our ocean. That's right, every single minute. And what worse, that plastic doesn't disappear. Today, I would like to speak on a topic that affects not just human, but every living creatures on the planet: plastic pollution. Plastic was invented to make life easier. It's cheap, durable, and versatile. But over time, its convenience has turned into a serious global problem. Every year, more than 300 million tons of plastic were produced, and large portion of it ends up as waste in our environment, especially in our oceans, rivers, and forests. They often mistake plastics for food, and thousands of them die every year due to the plastic ingestion. But plastic pollution doesn't just affect animals, it harms us too. When plastic breaks down into a microplastics, it can enter our food. Let's welcome our dancer of class 12 on the stage as they bring happiness to their graceful performance. Come on,
are visible plastic objects and particles in the earth environment that adversely affects human life, wildlife, and their habitats. Realize is that plastic takes hundreds of years to decompose. In the meantime, these small and big bites of plastic harms our environment in countless ways. So, the next main point is, what are the impacts of plastic pollution on our environment? Good news is we can change this. We can say no to single-use plastic, carrying reusable bags and bottles. To free our mountains, from the burden of plastic waste. We pledge to beat plastic pollution by eradicating single use of plastic from everyday use and evolving sustainable waste management. As mountain people, we demand for policies that support design systems which are circular in nature. Have families, friends and peers. We strongly advocate for polluting companies to be responsible for the plastic trash. Tanzim Diskit.
Sifat Sri Namo. Am Sumpah Patma Dirmit. Am Jipa Syam Dolmat. Slogan teachers pinju dere na ang sumpau third position में का योग तो जो stanzin legs to class 9 और योग तो message करा था am nispa stanzin khando 9 class जिन्हें am tanko योग तो जो dechen social Denatola Symposium Junior Buju. Junior Am Sumpah Yosta Tuju Stanzin Chunzum. Stanzin Chunzum. Am Ispa Yosta Tuju Lekdan Gyatso. Am Ispa Lekdan Gyatso Sudanda. Am Tanko Yosta Tuju Siring Dorkar. Denatola Senior Blue Denatu Am Sumpah Yosta Tuju Stanzin Chunzo. Am Sumpah Stanzin Chunzo Sudanda. Am Mistake Stanzin Yangdo. Am Mistake Stanzin Yangdo Sudanda. Am Tanko Stanzin Pasang. तो अभी जल्दी से फ्रेश होती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। वैसे तो हमने भी सोचा था एक मॉडल बनाने का, बट एट द एंड हमने उसे टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए। हमने लाइक प्लास्टिक के बॉटल्स कलेक्ट किए थे अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एंड हमने सिर्फ अपने सराउंडिंग से कलेक्ट किए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे। और हमें अपने सिर्फ सराउंडिंग से ही हमें 3.5 बैग फुल ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स मिले, एंड विच इज़ अ लॉट आई गेस, आई थिंक। मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है। सो आई रिक्वेस्ट कि जितना हो सके प्लास्टिक की बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स जो है, प्लास्टिक मतलब कि प्लास्टिक की हर कोई भी चीज़ जितना हो सके कम यूज़ करें। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।